News 18 India. For their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds
as also tax exemption on certain income of some IFSC units are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो बजट, अंतरिम बजट पेश कर दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने, और बड़ी खबर उसमें यह कि इनकम टैक्स रेट्स में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है। कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि इनकम टैक्स रेट में मैं अंतरिम बजट के परंपरा के अनुसार कोई भी बदलाव प्रस्तावित नहीं कर रही हूं। तो आयकर में कोई बदलाव नहीं है, यानी अगर कोई राहत की उम्मीद की जा रही थी तो ऐसी कोई राहत की घोषणा नहीं है। नई टैक्स रेजिम में 7 लाख तक की आय वालों पर जो टैक्स नहीं लगता है, वही उन्होंने एक बार फिर रेखांकित किया कि जो 7 लाख जो रिबेट मिलती है, 5 लाख के ऊपर वालों को जो रिबेट मिलती है, उसी हिसाब से वो अभी भी जारी रहेगी। पिछले साल जिस तरह से टैक्स था वही टैक्स दरें इस साल भी लागू रहेंगी। कोई बदलाव नहीं है, ना इनकम टैक्स की दरों में, ना किसी और ऐसी चीज़ में जिससे इनकम टैक्स देने में, आयकर देने में किसी भी करदाता को कोई फ़ायदा या नुकसान हो। बड़ी बात यह कि कोई टैक्स चेंजेस नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट जो है वो 11.1% बढ़ा दिया गया है। ये एक बड़ी खबर। और फिस्कल डेफिसिट जो घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, वो अनुमान लगाया गया है कि जीडीपी का 5.1% रहेगा। यानी सरकार जो है वो बजट का जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट सेट था 2025-26 के लिए 4.5% का, उसी तरफ बढ़ रही है। और वो इस साल घटाकर 5.1% रखने का अनुमान है, वो टारगेट है, ताकि 25-26 तक जाकर वो 4.5% पर आ जाए। 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है अभी भी नई टैक्स रेजिम में। रिबेट के साथ 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, वही जारी रहेगा। अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई इस बार राहत नहीं दी गई है। इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स की दरों में कोई भी बदलाव नहीं है। जीएसटी देनदारों का टैक्स बेस दुगना हुआ, उन्होंने बताया, और भी सारी बातें बताई कि किस तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर है, चल रही है। लेकिन इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। हमारे साथ अश्विनी जी मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट। अश्विनी जी, तो पहली आपकी प्रतिक्रिया, कोई बदलाव नहीं है टैक्स दरों में? कोई बदलाव नहीं है, जितना हमने सुना। वो टैक्स प्रोसेसिंग में उन्होंने कहा कि वो जो पीरियड है वो कम कर देंगे 93 दिनों का, और वो सब। नहीं, वो तो ऑलरेडी प्रोसीजरल चेंजेस हैं, हो ही रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट्स काफ़ी हैं, उस पर चली रही है गाड़ी पटरी पर जो कुछ छोटी छोटी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, कि कुछ थोड़ा सा हो सकता है 10% का और रिलीफ मिल जाए, 10 लाख तक हो जाए या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाए, वो कुछ भी नहीं है। तो वो अभी कुछ भी नहीं है। फिस्कल डेफिसिट 5.1% का टारगेट रखा गया जीडीपी का। आलोक जी। हाँ बिल्कुल, इसमें ये फिस्कल डेफिसिट को से उम्मीद, आशंका ये थी कि अब की बार जो है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, लेकिन ये 5.8% पे कंटेन कर लिया गया, और अगली बार और एम्बिशियस है 5.1% का। तो दरअसल देखना होगा जब फाइनल आंकड़े आएंगे कि जो सरकार के तमाम प्रोग्राम्स थे, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह के, वो हाउसिंग को लेकर है कि जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, चॉल्स में रहते हैं, यानी कि ये बात हो रही है जो शहरी लोग हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, उनके लिए एक स्कीम लाने की तरफ संकेत दिया गया। हाँ डेफिनेटली वो भी, और इसमें एक महत्वपूर्ण स्कीम और है कि वो जो छत पर अपने आप सोलर एनर्जी बनाई और मुफ्त की बिजली, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा है। वो कैसे इम्प्लीमेंट, जैसे दिल्ली सरकार ने कोशिश की थी उसी तरीके की, वो देखते हैं कैसे दिल्ली में, तो चूंकि उस तरह के छतें नहीं है, लेकिन दिल्ली के बाहर जो सिस्टम है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो अपने आप में बहुत बहुत महत्वाकांक्षी। जी हाँ, ये इस पे बात करेंगे, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन टैक्स पर जो उम्मीद थी वैसा नहीं है। क्या कहा टैक्स पर वित्त मंत्री ने, वो एक बार फिर सुन लीजिए। I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year,
thereby making refunds faster.